Siddhi and Devendra, you have done it, is it? Good. Yeah, तो अच्छी बात है. Okay, so we'll see that book again, solution manual, solution of that. Okay, so hello, hello, can you hear me? आवाज आ रहा है क्या मेरा? Hello, यस सर, आ रहा है सर आवाज. what is the bubble point, temperature and composition? कितना है values? किसने किया है बोल रहे हैं? Nobody has done it. टेम्परेचर निकाला था ना कल हमने, कितना टेम्परेचर निकाला था? Sir, 344. 344. Okay, so then what we need to do is then we need to find out the composition, right? Once we know the temperature, at that temperature we know the value of K. So find out what is the value of Y. Right? Y is equal to K into X. Right? X1 पता है, X2 पता है, X3 पता है, right? K पता है हमारे को वो temperature पर. Then find out what is the value of Y1, Y2, Y3. And raise your hand once you finish it. हो गया क्या? Has anybody done it? Y1, Y2, Y3. Sir, Y1 0.616 है, Y2 0.227 and Y3 0.162. If you add this, what do you get total? Summation of yi.
1.005. ओके, ठीक है। कौन सी दी गई है? Yes, sir. गुड। और किसका हो गया? रेज योर हैंड। You are supposed to find the temperature, bubble point temperature हमने निकाला था कल 344 Kelvin। उस टेम्परेचर पे you must interpolate the value of K from the data, or rather pressure, vapor pressure from the data, and that can be used to get K value, which is PIS upon P। और उसके बाद और किसका हो गया? Who else has finished it? सबका सेम आंसर आ रहा है क्या? जो शिवानी सिद्धि ने बताया 0.616, 0.227 and 0.162। Yes, sir. Okay, good. So if you look at the book value थोड़ा different है, but doesn't matter. We have to look at the procedure of doing it, not actual value. So book में उसने निकाला है 344.6 as bubble point temperature, and Y1 is 0.61, Y2 is 0.226, and Y3 is 0.162. The numbers are not important, the procedure of doing it is important, and they are close enough. इसका 0.998 आया total, summation of Y हमारा 1.005 आया, that is good enough. Okay, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन है on calculating bubble point temperature and composition? Okay, no questions, then we can move to the next point, which is dew point calculations, right? So next part was find the dew point and the liquid composition. तो कैसे करेंगे? How will we do it? Any idea? कल बताया था मैंने आपको। Can you see this dew point? So what you do is, you know what is the pressure, right? Pressure पता है हमारे को 101.3 kPa. We don't know the dew point temperature. Do we know the vapor composition? Vapor composition दिया है क्या? Rikshita? Sir, liquid composition is given. So we have to take the our bubble point. We have to use that composition as liquid composition.
और बबल ड्यू पॉइंट कैलकुलेशन करने के लिए वी यूज दैट सेम कंपोजिशन एज वेपर कंपोजिशन. ओके, उसने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है बट दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो व्हेन वी कैलकुलेट बबल पॉइंट, जो कंपोजिशन दिया है उसको हम लिक्विड कंपोजिशन लेके करेंगे. And when we want to calculate dew point, we'll assume that same composition as vapor composition at point dew point. So it will be x1 equal to 0.45, x2 equal to 0.3 and x3 equal to 0.25. Okay? And then what we'll do is we'll use this procedure, assume a temperature, calculate K values from vapor pressure, calculate Xi equal to Y upon Ki, and this condition should be satisfied. Summation of Xi equal to 1. अगर नहीं आया तो then we have to change the temperature and again repeat it. ठीक है? So again we'll start the same thing, calculate what you call as xi at given temperatures जहाँ vapor pressure दिया है, and let's see what we get for summation of xi. So let's see how we'll do it. So for each of these temperatures, 333, 343, 353, 363, calculate Ki values, right? Pi is upon P. Then calculate Xi values and summation of Xi. 1 आता है तो ठीक है, that is above dew point. नहीं आता तो then you have to see other temperatures. ठीक है, करो फिर. Find out summation of Xi at all these temperatures, assuming Yi equal to 0.45, 0.3 and 0.25. समझ में आया लोगों को कैसे करने का? Because we have to find out two temperatures जिसके बीच में वो ड्यू पॉइंट है, जैसे हमने किया था, राइट? Temperature was between 343 and 353, right? 343 पे 0.96 था पहले, summation of y, and 353 1.3 था. So in between those two ranges temperatures, the bubble point was there. Similarly, we have to find out for dew point, summation of xi is between, एक below 1 आएगा, एक above 1 आएगा, those two temperatures, then we have to interpolate. ठीक है, so let's find out summation of xi at all those temperatures and see what are the values we get. Okay, so what is the value of summation of xi at 333? 1.8162. 1.8. 8162. Okay, 343 पे
इसका हो गया 343 1.1592 1.159 353 353 होगा किसी का Sir, at 353 Kelvin, it is 0.8007. हाँ 0.8007. 0.807 right so it has to be between 343 and 353 Kelvin right so now what we want is essentially we want a value of 1 we have 1.15 and 0.8 right so difference is 0.35 बराबर summation of xi difference between 343 and 353 is 0.35 for a difference of 10 degrees 10 Kelvin right but we want a difference of 0.15 तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर निकालो इंटरपोलेशन कैसे कर सकते हैं right for a difference of 0.35 in summation of xi the temperature difference is 10 Kelvin so if you want a difference of 0.15 what should be the temperature difference you can find out that and add it to 343 समझ में आया लोगों को okay so we have 343 Kelvin and summation of xi is so this difference is 10 Kelvin and this difference is ठीक है so for 10 Kelvin the difference is 0.35 so ultimately what we want is यहाँ पर चाहिए हमारे को सिर्फ 1.159 minus 1 इसके लिए कितना रहेगा केल्विन डिफरेंस राइट so for 0.352
टेम्परेचर डिफरेंस इज 10 केल्विन, तो फॉर 0.159 कितना हो जाएगा? Right? What will be this value? Four point five. 4.5. So if we add this to 343, that should be our dew point, and that's how you do interpolation. समझ में आई बात कैसे इंटरपोलेशन करने का? Because we are assuming a linear value, linear graph, जैसे ऊपर दिखाया मैंने आपको, right? What I've shown here is linear, right? अगर linear calculation के लिए ऐसा कर सकते हैं हम. We don't have to do too much guesswork. We can find out exactly कितना होगा. Is this understood? कितने लोग को नहीं समझ में आया है? Raise your hand. ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है. So assume 347.5 Kelvin as the dew point, and then find out summation of xi and see what value you get. And once you finish calculations, raise your hand. हेलो सर, आप क्वेश्चन दिखा सकते हो का? वो डेटा चाहिए कैलकुलेट करने के लिए. अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ? किसका हो गया? Raise your hand.
Has anybody done it? Summation of xi at 347.5. 347.5, you have to find out the value of PAS, PBS, and PCS. Similarly, just like we have done it now. Then find the value of xi and summation of xi. Sir, 1.098. 1.098 और किसका हुआ? सर 346 पे 1.023 आ रहा है. 346. हाँ सर. 347. सर मैंने वो नहीं किया था, वो मैंने खुद सॉल्व किया था. तो 346 कहाँ से आया आपके पास टेम्परेचर? सर मैंने वो खुद लेके देखा क्या आ रहा है. नहीं, अज्यूम किया आपने. हाँ आपको बताया मैंने मेथड एक्चुअली कैलकुलेट करने का. यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दैट, इज इट? सॉरी सर, क्या? जो मैंने मेथड बताया टेम्परेचर कैलकुलेट करने का बाय इंटरपोलेशन 347.5 जो आया हमारा, यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दैट मेथड, इज इट? सर समझ में नहीं आया थोड़ा सा. समझ में नहीं आया तो मैं पूछा था ना कि समझ में नहीं आया तो बताओ करके. सॉरी सर. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट दैट टाइम यू शुड आस्क क्वेश्चंस ना. मैंने आस्क यू समझ में आया कि नहीं. व्हेनेवर देयर इज अ न्यू कांसेप्ट आई ऑलवेज आस्क, राइट? कि क्या समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया. सो जैसे ये बताया था कल मैंने, राइट? इफ यू प्लॉट वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, राइट? 340 33 343 यहाँ पर डजेंट मैटर, इट कैन बी 343 353. Right? So if it is 353 and I want to find a temperature in between these two, right? Suppose this is 347. इसका अगर मेरे को वैल्यू चाहिए, वेपर प्रेशर वैल्यू, right? I want to find out, sorry, this value. How do I find out? What is the slope? What is slope? Slope is this, right? Y upon x. समझ में आया है सिद्धि? हाँ सर. Right? Slope is y upon x. So if I find out slope, I can always find out कि क्या होगा difference between if I know this value of x. Or if I know the value of y, right? अगर slope पता है, if I know y, I can find out x. Or if I know value of x, I can find out y. So that's what I have done here. यहाँ पर क्या किया मैंने? 343 पे आया summation of xi 1.151. I'm not plotting versus PAS. I'm plotting versus xi now, right? So if I plot PAS versus xi,
summation of xi. I'll get a straight line. Sorry, temperature versus xi, not. So 343 पे 1 point something था, and 353.8 था, right? So this is 0.8 and this is 1.159, right? If I plot a straight line, assume a straight line between these two, I can find out at what temperature this value is 1. समझ में आ रहा है सिद्धि? हाँ सर. What I have done is I said 343 1.1.159 है, 353 पे 0.807 है, तो 10 डिग्री केल्विन का डिफरेंस जो इधर है टेम्परेचर में, that is giving a difference of 0.352 in summation of xi. But what I want is actually, I want not 0.8, I want 1 as summation of xi, right? 1.159 minus 1 gives me difference of 0.159. समझ रहे ना? Because from, if I have to go from 343 to 353, I have to basically I am increasing temperature to सर वो सेम जो प्रेशर फाइंड करने के लिए किया था. हाँ वैसे सिमिलर कर रहे हैं, तो 3.352 के लिए 10 केल्विन का डिफरेंस है, तो 0.159 के लिए कितने केल्विन का डिफरेंस करना पड़ेगा मेरे को? That's what I found out as 4.5 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, right? So 4.5 I added to 343 and I get exact temperature which is the dew point now for me. आप जो कर रहे हैं उससे क्या मल्टीपल इटरेशंस करना पड़ेगा, 346 किया, 347 करना, because you want to get as close as possible to summation of xi equal to 1. Multiple bar, there's nothing wrong with it, but you have to do ओके सर. okay. समझ में आया सिद्धि? सिद्धि, can you hear me? यस सर, समझ में आ गया. समझ में आया क्या? हाँ सर. ओके, सो इसमें डायरेक्टली मिल जाता है हमारा टेम्परेचर, बिकॉज दैट्स द वैल्यू ऑफ इंटरपोलेशन. यू डोंट डू टू मच ट्रायल एंड एरर. ओके, सो और किसका हो गया कैलकुलेशन? 347.5 पर हो गया कि किसी का समेशन ऑफ एक्स आई? If you finish calculations, raise your hand. Sir, I'm getting 0.965. At Yes, sir. 347.5. I'm also sir 0.965. Okay, so maybe there is some round off error which you are getting, because exactly same temperature book में भी है आया है. He's also got the same temperature, and let me show you that value.
ओके, सो इसका टेम्परेचर भी 347.5 एग्जैक्टली आया। तो इसका कैलकुलेट पी एस, अगेन इंटरपोलेशन करना पड़ेगा वेपर प्रेशर के लिए एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें शायद आपका कुछ राउंड ऑफ हुआ होगा। सेम मेथड, जैसे आपने सर टेम्परेचर निकाला वैसे ही आपको वेपर प्रेशर निकालने का है। वेपर प्रेशर वैल्यूज आर डिफरेंट। हाँ, जो वेपर प्रेशर वैल्यू में कुछ राउंड ऑफ किया होगा, बिकॉज सी जस्ट लाइक वी डिड दिस कि टेम्परेचर कितना आएगा, वैसे ही हमारे को 4.5 डिग्रीज के लिए कितना वेपर प्रेशर चेंज होगा निकालने का है। सो इफ आई लुक एट दिस वैल्यू 343 पर 133.9 है, राइट, 133.29 है, और 353 पे 186.61 है। तो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर इज हाउ मच वी नो, इज अराउंड 53 पॉइंट समथिंग, राइट, फॉर 10 केल्विन। तो 4.5 के लिए कितना होगा, जैसे निकालने का है। जैसे हमने टेम्परेचर निकाला वैसे ही वेपर प्रेशर इंटरपोलेट करने का है। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन इट। समझे की बात? डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट एग्जैक्टली 347.5? यस, नो, डोंट नो? कितने लोग को नहीं समझा ये? रेज योर हैंड। I need some response. If you don't respond, that means I can move forward then. Only one person is not understood. बाकी सब कुछ समझ में आ गया? यस देवेंद्र सर। समझ में आया आपको? देवेंद्र समझ में आया क्या? यस सर। So अगर समझ में आया तो एक्सप्लेन करो, फिर वैभव को उसको समझ में नहीं आया। हॅलो। Can you? यस Yeah. वैभव, हॅलो। हा बोल ना. काय नाही समजलं. अरे ते वेपर प्रेशर कसे म्हणजे 347.5 ला. अरे आपण हा हा काय ते आपण स्लोप कसं काढतो, स्लोप काढून एका ते जे 3 पॉइंट्स आहेत ना ते एका लाईनवर लाय करणार ना. म्हणजे 333 हा केल्विन, 343 केल्विन आणि 347.5 केल्विन हे तिन्ही हा एका लाईनवर असणार, बरोबर. आणि कारण काय कॉन्स्टंट हा ह्याच्यावर एका लाईनवर काढतो, तर मग त्या 333 आणि 343 केल्विनचा जो स्लोप असणार त्या दोन पॉइंट्सचा, हा तो 343 आणि 347.5 केल्विनच्या लाईनच्या इक्वल असणार ना. आपण सीएम मध्ये केलं तसं हो बरोबर. पहिल्या चॅप्टर मध्ये सेम तसंच करायला लागणार. मग ते स्लोप काढल्यावर आपल्याला त्या पॉइंटचं हे मिळून जाईल ना, प्रेशर y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 करून. मग असं नाही करू शकत का की त्या दोन वेपर प्रेशर मधला डिफरन्स काढून 10 केल्विनचा हा तो 1 केल्विनला किती होतो 5.332 आणि त्याला मल्टिप्लाय बाय 4.517 ने केलं तर. हा तेच तर ना, इनडायरेक्टली तू तेच बोलतोयस, तसंच करायचं. तेच ना. हा मग हा ठीक आहे मग. ठीक, समझ में आ गया ना? तो करो। If you understood, then calculate it. तो ये जो है एग्जैक्ट टेम्परेचर मैच हो रहा है हमारा ड्यू पॉइंट का। सी बबल पॉइंट का उसका टेम्परेचर अलग आ रहा था 344.6, दैट्स फाइन। ड्यू पॉइंट का हमारे कैलकुलेशन से 347.5 एग्जैक्टली आ रहा है, तो प्रेशर वेपर प्रेशर भी इतना ही आना चाहिए आपका। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस वैल्यूज, देयर इज सम कैलकुलेशन एरर।
इसका? हेलो सर। या सर मेरी समेशन एक्सआई की वैल्यू पर 0.999 आ रही थी। हाँ ठीक है ना, दैट्स फाइन, इट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन द बुक। क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर मैच हो रहा है, तो इट शुड कम अराउंड दैट ओनली। और किसी का हो गया? रेज योर हैंड। 0.999 करीब आना चाहिए। ओके, विराज किधर है? विराज कर रहा है कि नहीं? चालू है सर। कर रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है कि नहीं आंसर? आ रहा है सर। करो करो। कल एक मिस्टेक पॉइंट आउट किया था, ऐसी मिस्टेक्स पॉइंट आउट किया करो। मिस्टेक्स होती है सबसे, राइट? नथिंग रॉन्ग विथ इट, इट्स गुड एक्चुअली। और किसका हो गया? दीक्षित हुआ क्या? सर 0.96 आ रहा था। 0.96 आ रहा है। वेपर प्रेशर का आपका कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ये इंटरपोलेटेड वैल्यू बराबर नहीं आ रहा होगा आपका। कितना है यहाँ पर 153 की जगह पे आपका? सर 157.28। हाँ, तो गड़बड़ किया थोड़ा आपने। एग्जैक्टली ऐसे लेने का, डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर्स इज 10 केल्विन। वेपर प्रेशर में इतना डिफरेंस है, तो 4.5 के लिए कितना रहेगा? एंड ऐड दैट टू 343 के वेपर प्रेशर को। ऐसे ही किया गया आपने? यस सर। आई डोंट नो फिर क्या मिस्टेक किया आपने, क्योंकि देवेंद्र का भी आ रहा है, और बुक में मिस्टेक्स होती है कभी कभी। अगर किसी और का आ रहा है तो आपका भी आना चाहिए। और किसी का आया क्या? सिद्धि? सर कर रही हूँ। ओके। और कौन है जो सीरियसली कर रहा है? श्रद्धा? श्रद्धा है क्या? नहीं है। शिवानी? हाँ सर। सर नरेश? 0.97 आ रहा है। 97? 0.9। पेपर प्रेशर में कुछ गड़बड़ कर रहे होगे आप लोग। समझ में आया क्या कैसे कर इंटरपोलेट करने का? तो दैट इज द की। हाँ इफ यू इंटरपोलेट करेक्टली देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इंटरपोलेशन में गड़बड़ किया, ये पेपर प्रेशर बराबर नहीं आया, तो के वैल्यू चेंज हो जाएगा। के वैल्यू चेंज हो गया तो एवरीथिंग विल चेंज। सो फोकस ऑन इंटरपोलेटेड वैल्यूज, बराबर आ रहा है क्या? इफ टू पीपल आर गेटिंग इट, एवरीबॉडी शुड गेट इट। मुर्तजा कर रहा है क्या? सो रहा है मुर्तजा? और कौन है? ऋतुजा हुआ क्या? हाँ सर। हुआ क्या? आया क्या आंसर? सर 9652 आ रहा है, 0.96। फिर कर से रहे हो? रीचेक कर रही हूँ। कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है देवेंद्र, what you can do is you can take a photo of your calculations and see if you can put on chat। डाल सकते हो क्या? देखो।
सर अभी मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ सर, बाद में मोबाइल से निकाल के ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, सो अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, एक और टॉपिक कवर करना था मेरे को, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। सो यू हैव अ टेस्ट ऑन मंडे एट 2 PM, ठीक है। यूनिट 3 आज तक जितना भी किया है पूरा रहेगा, इट विल बी न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रॉब्लम्स। डेरिवेशन का इतना नहीं देने वाला मैं, दिस इज मोस्टली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, 2 or 3 questions, and you have to solve it with detailed steps, get the correct answer, scan it, PDF, and put it on Google Classroom. ठीक है, any questions? How the test will be done? It will not be objective, it will be numericals, because अभी numericals ही कर रहे हैं हम, तो numerical ही पूछने वाला हूँ मैं। Any questions, doubts on PowerPoint, dew point calculations? ठीक है, and your phase equilibrium thermodynamics का third unit assignment कब due है? मेरे थर्ड असाइनमेंट ड्यू पता है किसी को? अगेन एवरी वेडनेसडे रहता है, सो 7 रहेगा। एंड अगर डिफिकल्टी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द ग्रुप, दैट्स व्हाई वी क्रिएट दैट ग्रुप ऑफ फेज इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन वी एंड द मीटिंग।